Pakistan Railways has been saved from its latest crisis. PSO has provided 1.4 million litres of oil to Pakistan Railways to prevent rail services from being suspended. The release of fuel comes at a crucial moment for the railway company. Current fuel stocks are only sufficient to last a single day, forcing passenger and freight trains to stop running. The fuel supply was originally stopped because of Pakistan Railways' record of bad payments. PSO says the railways owe ₹750 million in unpaid fuel costs. Pakistan Railways General Manager Ashfaq Khattak said that the PSO is providing them fuel and that train services will not be suspended. ये हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस है, आज से नहीं है, ये 50-60 साल से कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। हमारी ट्रेनें देखें चल रही हैं, कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन वो एक दिन का रह जाना, स्टॉक के अंदर रह जाना, वो किसी ने अगर कह दिया है अभी तक ट्रेनें चल रही हैं, अगर खत्म हो जाएगा तो नेचुरली फिर डीजल के बगैर तो रेलवे नहीं चल सकती ना। ये रेगुलर प्रोसेस है, हर दूसरे दिन हमें एक पूरी ट्रेन फुल लोड मिल जाता है पीएसओ से। बहुत कम हुआ है कि जी हमें डीजल ना मिला, और हो जाता है कभी कभी। Meanwhile, due to mounting financial losses and non-availability of rail engines, Pakistan Railways has decided to increase railway fares by 10 to 30%. This was disclosed in a meeting of the Standing Committee for Railways here. रेलवे के इसके फेयर बढ़ाने की वजह से वाकई काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग बहुत इस चीज़ को जो है ना, इससे काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। किराए बढ़ाए हैं जो कि ज़्यादातर इफ़ेक्ट पड़ा है पेट्रोल की प्राइसेस से, या जिस भी वजह से हुकूमत ने बढ़ाए हैं, इस चीज़ को बेयर तो आम आदमी को करना पड़ेगा। जो रेलवेज़ के किराए बढ़ाए हैं ये नहीं बढ़ाने चाहिए थे। अगर रेलवेज़ के लिए देना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को फंड्स देने चाहिए, जिसकी वजह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको इम्प्रूवमेंट में लानी चाहिए। 1000 रुपये वो किराया दे के जा रहा था, अब किराया बढ़ गया, बढ़कर 1100 1150 रुपया हो गया, तो एक बंदे के ऊपर प्रेशर पड़ा है। सिंगल बंदा नहीं जा रहा, पूरी फैमिली जा रही है उसके साथ। On the other hand, Pakistan Railways also said that they are considering to fire over 10,000 employees, which will save Pakistan Railways almost 130 million rupees. The prevailing situation of railway presents a precarious picture marked by financial woes.